Hello student, today's topic is delayed incompatibility. Is the condition arising when the reaction between prescription ingredients occur at a very slow rate and no change are observed. मतलब इसका जो रेट होता है स्लो होता है और नो चेंज होता है. However, the changes may become visible on standing. Types of chemical incompatibility: oxidation, hydrolysis, polymerization, isomerization, decarboxylation, carbon dioxide absorption, combination, formation of insoluble complex. First है oxidation, the condition of loss of electrons or gains of oxygen is termed as oxidation. मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और गेन होता है ऑक्सीजन का, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. ऑटो ऑक्सीडेशन, दिस रिएक्शन occur spontaneous with the atmospheric oxygen without other factors. Third है pre-oxidation, this substance example metal and some impurities are the catalyst of oxidation reaction. Give below are the factors रिजल्टिंग इन ऑक्सीडेशन. मतलब ऑक्सीडेशन का फैक्टर क्या क्या है. ऑक्सीडेशन लाइट है फर्स्ट, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड पीएच, फोर्थ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, फिफ्थ प्रेजेंस ऑफ प्री ऑक्सीडेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स. सेकेंड है हाइड्रोलाइसिस, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर react with a compound and breaks its covalent bond. Thus, this reaction ultimately lead to breakdown of the compound. Types of hydrolysis reaction. First है ionic hydrolysis. Codeine phosphate is equal codeine phosphate plus codeine plus phosphate. सेकेंड है मोलिकुलर हाइड्रोलाइसिस, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड H2O के साथ संपर्क होगा जिससे कि सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड प्राप्त होगा. थर्ड है पॉलीमराइजेशन, द कंडीशन इन विच मोनोमर स्मॉल रिपीटिंग यूनिट बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन पॉलीमर्स इज टर्म्स पॉलीमराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड, हीट देंगे तो पैराफॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा. फोर्थ है आइसोमराइजेशन, द कंडीशन इन विच अ ड्रग कन्वर्ट्स इनटू इट्स आइसोमर्स इज टर्म्ड एज isomerization. The isomers formed are identical in their molecular formation but differs in their chemical atomic arrangement. First है optical isomerization. In this process of isomerization, the optical active drug converts into a less active form. Example: change in pH or temperature convert high adrenaline into D-adrenaline. Give below are the factor affecting optical isomerization. तो इसका फैक्टर क्या क्या है. फर्स्ट है टेम्परेचर, बी है पीएच, सी है सॉल्वेंट, डी है इम्प्यूरिटीज. नेक्स्ट पॉइंट, geometrical isomerization. In this process of isomerization, the isomers are expressed by cis और trans. cis फॉर्म सी के ऊपर ए है इज इक्वल सी ए. ट्रांसफॉर्म में डबल, एक ऊपर रहेगा एक नीचे. Decarboxylation, the condition in which a carboxyl group is removed
and CO2 is released is termed as decarboxylation. Sodium hydroxide autoclaving, sodium plus कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है ना. Carbon dioxide absorption 6 point. The condition in which a precipitate is formed in the presence of carbon dioxide in a pharmaceutical dosage form is termed as carbon dioxide absorption. For example, calcium oxide, hydroxy प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट. सेवेंथ है कॉम्बिनेशन. द कंडीशन in which the pharmaceutical dosage form contain variable charged substance, example surfactant carrying positive and negative charge is termed as combination. Eighth है formation of insoluble complex. In this condition, the insoluble complex formed do not produce the desired therapeutic effect. Example, the heavy metal inactivate tetracycline. Third है therapeutics incompatibility. When one or more drugs produce a response or intensity which differs from that intended in the patent, therapeutic incompatibility arises. For example, the bacterial action of penicillin is antagonized by chloramphenicol. Next है mechanism of therapeutics incompatibility. The mechanism of therapeutic incompatibility are grouped as follow. First है pharmacokinetic, second है pharmacodynamic. Pharmacokinetic देखेंगे, this deals with the effect a drug produce and another drug. Example, absorption, distribution, metabolism and excretion. Pharmacodynamic, this deals with the pharmacological action produced when two or more drugs are intended. Example, synergism, antagonism, altered cellular transport.